Hello and welcome back to the Awaara Musaafir Show. This is like the compilation video of all our previous 10 episodes. Do check it out till the end. But before this video starts, I want to talk to you. तो जो द आवारा मुसाफिर शो का आइडिया है ये मुझे स्टक किया था कुछ 3-4 साल पहले जब मैं एक ट्रैक पे गया था. सारपास ट्रैक था नाम. मैं वहाँ पे बहुत नए नए लोगों से मिला एंड मैंने जो कॉन्वर्सेशंस किए वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे उन लोगों के साथ. एंड जस्ट आफ्टर दैट ट्रैक मैं गया था इजिप्ट. नाउ इन इजिप्ट आई वाज वर्किंग विद 20 पीपल फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज. हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो मुझे बहुत जानने को मिला उन लोगों के बारे में, उन कंट्रीज के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में. एंड आई जस्ट थॉट कि ये जो मैं कॉन्वर्सेशंस कर रहा हूँ आई शुड जस्ट रिकॉर्ड इट एंड पुट इट आउट ऑन द इंटरनेट ताकि और भी लोग जान सके इन सब चीज़ों के बारे में. तो दैट्स हाउ द पॉडकास्ट वॉज बॉर्न. नाउ मैंने फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया एंड आई जस्ट पुट अप अ स्टोरी कि यार मुझे वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत आ रही है. सो इफ एनीबडी वांट्स टू कोलैब विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट जस्ट डीएम मी. तो करण करके एक बंदा था उसने मुझे मेल किया, डीएम किया and we had a conversation and he was the first person who joined the Awaara Musaafir team and he edits all the videos right now. Like 99% videos वही edit करता है. मैं बहुत rarely videos edit करता हूँ. तो जो आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, जोश ऐप पे वीडियो देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस जो आप देखते हैं, ये पूरा करण एडिट करता है एंड कूडोस टू हिम फॉर डूइंग दैट बिकॉज उसके बिना ये शो आगे नहीं प्रोग्रेस कर पाता. आफ्टर दैट द सेकेंड पर्सन हु जॉइंड दिस टीम वॉज अंशुला. सो अंशुला इज आवर कंटेंट राइटर. जो भी आप रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट देखते हैं हमारे चैनल्स पे इट्स ऑल रिटन बाय अंशुला. जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे 90% ऑफ द टाइम अंशुला ही क्यूरेट करती है. उस पर क्या पोस्ट जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, उनका समरी लिखना, it's all done by Anshula. So this is like an all-round effort and without Anshula and Karan I wouldn't be able to do whatever I'm doing right now. So kudos to the Awaara Musaafir team. We are trying to get in touch with more people and grow this team. We are trying to hire new people now. So let's see, that's the future. And talking about future, I just want to tell you कि if you haven't joined our WhatsApp community till now, do join because हम कुछ नया करने वाले हैं हमारे WhatsApp community के साथ. इट विल बी समथिंग लाइक कि एवरी संडे वील डू अ जूम मीट एंड उस पर वर्चुअल मीट होगा. हम बुक्स के बारे में बातें करेंगे. जो पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं हम उन्हें बुलाने की कोशिश करेंगे एंड आप उनसे डायरेक्ट जो आपके सवाल है वो उनसे फेस टू फेस पूछ सकते हो जूम कॉल पे. सो दैट्स लाइक अ रियली बिग पर्क. तो डू जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी. अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट्स आने वाले हैं. नेक्स्ट एपिसोड इज फॉर ऑल द बुक लवर्स. बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. उसके बाद में जो इंटरेस्टिंग एपिसोड है उनके बारे में अभी नहीं रिवील करूंगा मैं. और थोड़ी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता. बट फिंगर्स क्रॉस्ड, ड्रीम्स डू कम ट्रू एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सपांड द आवारा मुसाफिर शो इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो बहुत जल्द आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी. सो या जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट टिल नाउ. और तो क्या बोलूँ यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Do watch our videos and share करो अपने friends के साथ में. So that's it from here. You can now watch the compilation video. Thank you. When I was in school, I used to paint and sketch, and I used to attend a lot of summer camps, art-related summer camps, but mostly sketching. And this summer camp that I had joined in class 7, उसमें मैंने अपनी first painting बनाई थी, and I really didn't like it. Like I didn't like how I painted, and that's when I stopped painting, and I thought that I'll only do sketching. But that was just like random. That was not. But I never decided that I want to pursue art or go into the field of art. That was never the plan. Then when I came to class 11, my parents wanted me to take science and become a doctor because my sister is already an engineer. So they wanted a doctor in their place. तो मैंने मेडिकल की, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैंने AIPMT का प्रिपरेशन किया. उसके बाद 12th के बाद मैंने अराउंड 20 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दिए जबरदस्ती, जो कि मुझे नहीं देने थे. एंड आई पर्पसली डिड नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट इनटू मेडिकल. Second year, I was going through a really tough time. I was in depression for 4 years after that, followed by the second year that I was in. So I was in depression, and I didn't draw or anything. मैंने कुछ भी create नहीं किया था तब तक. But as I was not in a good state, so I don't know how I picked up a brush and the paints, or मैंने paint किया and I drew something really beautiful that I really liked. It's not my own original artwork,
but it's somebody else's, but I copied it और वो बहुत ज़्यादा crazy बना. So Okay. that's when I realized that I started expressing through art. And जितने भी मैंने artworks बनाए थे, if I see them now, I can see a story building. That I was in Okay. pain, or the things that were happening to me. And उसके बाद कैसे कैसे सब कुछ ठीक हुआ, कैसे I recovered, how things changed in terms of colors, in terms of elements that I started drawing. So ये हाँ. नेम कहाँ से आया? एंड वो मतलब तू ऐसा मानता है कि संदीप जो है वो कंफ्यूज लौंडा से बहुत अलग है या सेम ही है, बट नाम ऐसे ही रखना था, कुछ तो रखा है? उसका स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है? नहीं, उसका बैक स्टोरी तो ये है कि जब मैं इंजीनियरिंग में था ना, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो हाँ. थर्ड ईयर तक तो मैं इतना एडिक्टेड हो गया ना, एडिक्टेड इज लाइक काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड, बट लेकिन नेगेटिव, हाँ मैं सही. इतना अटैच हो गया था ना हाँ. फोटोग्राफी से कि मैं मतलब तब से ही सोचना स्टार्ट किया था कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ फुल टाइम. मैं ओके. मतलब जेन्युइनली हैप्पी हूँ इसके बारे में, तो फिर कर सकते हैं ना इसको फुल टाइम. हाँ तो फिर मैं हाँ. इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ, और ये सब चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता, मतलब ये सब ओके. मैंने पहले क्यों फिगर आउट हाँ. नहीं किया. तो फिर उसी जोन में मैं चला गया. फिर तभी ओके. मैं तब से ही तभी यूजर नेम पहले कुछ भी रखता था मैं यूजर नेम. तो देखा अच्छा, होगा मतलब मतलब इसके कुछ पहले भी भी तूने कुछ और यूजर नेम रखा था? बहुत थे, कुछ भी था पहले तो. ओके. स्पिरिचुअली एग्जिस्ट करके था. फिर ओह नाइस. फिर एक बार तो बहुत फनी था, पता है, सड़क छापिन ऑडी करके यूजर नेम था मेरा. ओ भाई, बहुत मतलब एम्बैरेसिंग बहुत एम्बैरेसिंग लगता है मुझे अभी, नाइस. लेकिन था जो था. हाँ, तो फिर ओके. उसी धुन में था कि मतलब कि यार ये करे कि वो करे, ये करे कि वो करे. हम्म. तो फिर मैंने सोचा कि अभी इधर तक आ ही गए तो इंजीनियरिंग खत्म करते हैं, हम्म. फिर इंजीनियरिंग के बाद इसको स्टार्ट करेंगे. फिर मैंने वही प्लान था, ओके. वही किया. ओके. अभी इंजीनियरिंग खत्म हो गया, फुल हम्म. टाइम यही. ओके. तो फिर उसी में था कि इंजीनियरिंग और फोटोग्राफी में कंफ्यूज था, तो फिर रख दिया कंफ्यूज लूंडा. लिखने से पहले तुम्हें सुनना जरूरी है लोगों को. अच्छे रैपर्स को सुनो, उनकी वर्ड प्ले देखो, उनके फ्लोज देखो, कैसे वो स्विच करते हैं, कैसे वो क्या करते हैं रैप्स में अपने, उनका वर्ड कहाँ से राइम करता है, वो सुनो उनको. Right. जब तक मैं एक वर्ड बोलता हूँ हर रैपर को जो नया होता है, मैं उनको बोलता हूँ जब तक तुम्हारे कानों से खून ना आ जाए तब तक सुनते रहो उनको. तब ओके. तुम्हारी आदत खुद ब खुद, तुम्हारी लिखने की आदत जब तक शुरू ना हो जाए तुम उनको सुनो. 100% सच लिखो अपनी लाइनों में, तो वो जनता को रिलेट करेगा, वो उससे कनेक्ट करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे भी. अगर आप गलत लिखते हो पहले, तो फिर वो तो पहले आपको डिसलाइक करेंगे ऑब्वियसली, और हम्म. रिपोर्ट मार देंगे आपके चैनल पे. हाँ वो तो तो है. सच लिखना बहुत जरूरी है. फैक्ट्स ओके. जानो तब उसको लिखो. I think the only thing that people relate with a lot is trauma. Because everyone has had trauma in their lives. Nobody's Yeah. like always 90 and 100% happy, right? People are sad. Correct. So where is the music to make you feel those things? You Correct. get what I'm True. saying? So Yeah. and even if it makes you happy, it can make you cry, right? Khushi ke aasu, sort of a thing. So Okay. at the end of the day, if you have crazy music, it is supposed to make you cry. The song that a song that I've ever heard in my life that had a huge impact in my life, it made me cry. It didn't make Okay. me go gaga over. It didn't make me Yeah. jump on the bed. It made me Yeah. cry, right? Because that's Yeah. the only way I show my emotions. So like, I sing to make you cry. The song writing part of it was, I'm not even making this up, was 35 minutes. I wrote the entire song in Okay. 40 minutes, max, tops, Damn. tops. Yeah. Okay. But of course, the effort of it was definitely going on for the last 3 days because I was listening Yeah. to it again and again Yeah. and Yeah. again Yeah. and again, right? So I don't want you to think that I'm like some crazy writer who can write a song in 30 Yeah. minutes. No, I'm not. Yeah. Okay, but Yeah. when I It just feel like it, happened in the flow. yes. When it clicks, it clicks. When it doesn't click, Yeah. मैं 10 घंटे ही बैठूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा. So I wrote the song on the beat, and I wanted it to be like, I wanted to put it out as a proper hip hop song, like, because Okay. I listen to a lot of hip hop. Like Yeah. personally, I love listening to hip hop and R&B and stuff like that. So I wanted to put it out as that. But like फिर उसके बाद क्या हुआ? Like it got a little delayed. I went on to other things and whatever. Yeah. And March, April के around फिर lockdown हो गया. ठीक है? Correct. And I was just like, lockdown हो गया. No one's gonna want to listen to a hip hop song. People want to listen to stuff that makes them feel Yeah. good, that makes them, feel like everything's gonna be okay, sort of a thing. Yeah. And even right now, like, that was the intent of the song. When I converted that to what it is right now with the acoustic guitar, with the harmonies, with everything, Yeah. my Yeah. intent was ki people listen to it and it makes them feel good. They cry, Okay. but Yeah. because of the feel good, right? So Yeah. I still sing to make you cry, but that's because you feel good. That's because you have hope that this Yeah.
terrible time is probably going to end. And I want to have 1,000 streams in a week. That's my target. I want to, if this song works well, for me, a success would be having 1,000 streams in 7 days. I had 8,000 streams in 7 days. Okay. Music does what we cannot do. Like there are a limited number of possible combinations of words जो मैं बोल सकता हूँ ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे. करेक्ट. ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं पहुंचेगी. Music does exactly this. Music does exactly this. If you create a 15-second piece जो कि दिखाना चाहता है कि how sad you are or how happy you are, it will depict exactly that. Okay. So music fills in that part of us जहाँ पर हम communicate नहीं कर पाते, जिन चीजों को हम communicate नहीं कर पाते, जिन emotions को, जिन thoughts को हम शायद सोचते हैं कि हम बयान ही नहीं कर पाएंगे, हम बोल ही नहीं पाएंगे. Music does exactly that. वो हमारी कमियों को पूरा करता है. Favorite leg I think was in this part where through Punjab. Basically Punjab was the highlight of my journey. I mean, not in terms of natural beauty or anything, but just traveling with Jora and Jagdev and then waking up early morning in that Haryanvi village where you were in pitch darkness the night before. So those sort of moments really stay in your mind, where you get to see what the world is like in the daylight after driving through the dark all night. So yeah, there were some moments which definitely stay, but overall the entire trip is like kind of etched in my mind even now. Art for me is like my happy thing. If you ask what's the happiest part of my day, I'm a night owl also, and I like creating at night from 12 midnight to 2 a.m. So if you ask me what's the happiest part of the day, for me the happiest part of my day is when I'm sitting alone and practicing in silence or maybe some music. And what I am an artist, or what my creative path is not decided by Instagram, because the thing with Instagram is like I've been a brush calligraphy artist for 1 year now. Now with Instagram my audience is like used to my brush calligraphy content, but now I'm learning and putting other things as well there. In terms of Instagram, it is not a good thing because I'm kind of changing my niche. Brush calligraphy is a very modern art form. Copper plate calligraphy and the other things that I'm doing is a very traditional approach to it. So definitely it does mess up with the audience side of Instagram. But then again, at the end of the day, I do not want to be like an Instagrammer. I want to be a good artist. So like I think that if someone is beginning their Instagram, it's not about followers. It's about the content that you put up there. It's about how happy you are with what you are doing. I don't think if I keep doing brush calligraphy for 5 years, I'll be like as proud of the artist I am as I am right now. मैं केदारकंठा ट्रैक पे गया था, ऊपर बहुत स्नो थी, तो वहाँ पे हम समिट पुश हमने किया एंड मतलब वो बीच में अपना ऐसा एक्सपीरियंस बन गया था स्नो का कि मतलब ऐसे वॉक करते टाइम स्टिक को मैंने स्नो में मारा है एंड वो स्टिक पूरी अंदर घुस गई है. तो आई अंडरस्टूड कि भाई ये 3-3.5 फीट स्नो है अलग अलग जगहों पे एंड बीच में क्रेवासेस वगैरह है, ऐसा कोई इशू वगैरह हो तो कुछ कह नहीं सकते. तो ऊपर हम जा चुके हैं, फिर जब हम नीचे आ रहे हैं ना तो वो समिट के पास थोड़ा स्टीप है वहाँ पे एंड स्नो बहुत ज्यादा थी, स्लिपरी भी था. उस दिन हमारे अलावा कोई और ग्रुप ऊपर नहीं पहुंचा था क्योंकि वेदर बिगड़ सा रखा था, हम ही गए थे बस. एंड उससे नेक्स्ट डे के बाद तो एक हफ्ता कोई समिट नहीं कर पाया था, इतना खराब वेदर था ऊपर. तो हम उतर रहे हैं, हमको थोड़ा स्पीड में उतरने का करना था. तो स्टीप पॉइंट था, वहाँ पे हम 4 लोग थे और गाइड था, गाइड आगे लीड करा. तो ऐसे स्टीप के बाद थोड़ा कर्व सा था, तो एक पॉइंट था वहाँ पे मेरे से आगे वाले तीनों लोग फिसल गए एंड एक फिसला वो आगे जाके गाइड के पैरों के लगा एंड सामने खाई है. फिर जो गाइड खड़ा है गाइड के वहां से बिल्कुल लाइक 2-3 फीट आगे खाई है सीधा. फिर दूसरी बंदी थी वो जाके लगी, फिर तीसरा वो जाके लगा. तो 3 लोग हो गए एंड मैं उस स्पॉट पे खड़ा हूँ एंड आई नो मैं भी जाऊंगा तो मैं भी भिड़ूंगा वहां पे. एंड वो उठ ही रहे हैं क्योंकि 2.5-3 फीट स्नो है, तो उठना इज बहुत टफ, उसमें बहुत एफर्ट लगता है आपको करने में. तो मैंने कहा अब मैं गया तो सारे जाएंगे एंड बहुत डरावनी सिचुएशन थी. एंड आई नो केदारकंठा इज नॉट अ डेंजरस ट्रैक. मेरे को जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि अ फिट बिगिनर कैन डू दैट ट्रैक, ऐसा सीन है. बट वहां पे फिर मैंने उसी पॉइंट पे क्या किया, मैं वहीं पे बैठ गया, उस स्पॉट पे जहाँ से वो होना था मैं वहीं पे बैठ गया सीधा. मैंने धीरे धीरे बैठ के
थोड़ा थोड़ा स्लाइड करके मैं अपने लेग्स को आगे मार मार के दोनों मतलब ऐसे किक कर रहा हूँ, स्टेप बना रहा हूँ, फिर अपनी बॉडी को स्टेप को वहाँ पे एडजस्ट करके ड्रैग करके अपनी बॉडी को फिर मतलब थोड़ा स्लाइड करा, वहाँ पे बैठा, फिर पुश किया, स्लाइड करके बैठा, ऐसे करा मैंने। तो वो बहुत स्केरी मोमेंट था मेरे लिए एक तो। One is if it goes untreated for a long time, especially depression, it can be fatal, Okay. right? Because in depression, and the thing with mental health issues are a lot you are experiencing it in your body and mind. There is a big physical component to mental health issues as well. So when you are experiencing that, you your mind is basically telling you, I can't do this anymore. Okay. Your mind is telling you that I'm sad and things Yeah. are just not getting better. And doing things that keep us alive and well, like getting out of bed, brushing, meeting friends, doing something, those become difficult. Gradually, if you continue that way without being treated, it affects your memory, it affects the way you concentrate. Okay. It's hard to remember things, it's hard to Yeah. do things, like be as sharp as you used to be. Yeah. And so what happens is, and for depression particularly, the risk is that there is a risk of suicide, that you might Yeah. think at some point that it is just too difficult to go on living.